अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट पर हूँ और 24 दिसंबर को सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है फ्लाई जिन्ना से कराची से क्वेटा के लिए जो 7 बजे डिपार्चर होगा। इस ट्रैवल का जो मेन पर्पज़ है क्वेटा जाने का वो 25 दिसंबर को यानी कल बोलान मेल का इफ्तिताह हो रहा है, रिस्टोर हो रही है बोलान मेल काफ़ी तवील अरसे की बंदिश के बाद। उसको मैंने कवर करना है, उसकी इनाग्रेशन और उसका इफ्तिताह दिखाऊंगा आपको और फिर उसी ट्रेन से मैं बोलान मेल से क्वेटा से मैं कराची की तरफ 25 दिसंबर को चलूँगा और 26 को पहुँचूँगा। तो उस सफ़र को कवर करने के लिए और उस ट्रेन के इफ्तिताह को कवर करने के लिए मेरे सफ़र का ये पहला हिस्सा जो है वो कराची से क्वेटा बाय एयर है। तो मेरे साथ रहिए और इन्जॉय द फ्लाइट विद मी और होपफुली कुछ बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर आपको जहाज़ की खिड़की से मैं दिखाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह अ ब्यूटीफुल सनराइज़ यू विल सी। तो स्टे विद मी एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। ये एयरबस जा रहा है, इट मस्ट बी PK 300 to Islamabad। एयरबस PK 300 बहुत मशहूर और बहुत पुरानी फ्लाइट है जो सुबह 7 बजे इस्लामाबाद के लिए चलती है कराची से एवरी डे। वही फ़्लाइट होगी और ये हमारे पीछे टेक ऑफ करेगा। हमारी डेस्टिनेशन क्वेटा है और ये विल गो टू इस्लामाबाद। उसके बाद ये आ रहा है जी कल फिर। नाउ वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। हियर वी गो, टेक ऑफ रोल। लव दिस इंजन साउंड। थ्रोटल अप। अदरवाइज आसमान बिल्कुल साफ़ है और वो देखें जनाब सूरज नमूदार हो रहा है। Look at that, beautiful. Lovely sight. Absolutely fantastic. It's a beautiful sunrise you will ever see.
फ्लाई करने के बाद वी आर अप्रोचिंग कोयटा सिटी एंड कोयटा एयरपोर्ट। जहाज़ बदल ही नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है और थोड़ी देर में हम लैंड करेंगे। ब्यूटीफुल साइट। सूरज जो है वो बादलों के पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा है और मिस्ट दिस इज़ द प्लेन जो हमें कराची से लेकर आया है एंड दिस इज़ नाइस। गवादर एयरपोर्ट जो बनेगा ये उसका इम्प्रेशन है, बट आई लाइक दिस क्वेटा एयरपोर्ट। वाह, वेरी नाइस। जा रहा हूँ मेट्रो होटल जो प्रिंस रोड पर, जमाना प्रिंस रोड।